Good evening, ma'am. Good evening. Let's start. Come on, your cameras. Just close your eyes. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath and release. Take one more deep breath. Inhale and feel that breath and say thank you. Thank you for the magical air that we are breathing. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for the divine nature. Thank you, universe, for this divine, beautiful evening where we come together to learn how to practice gratitude and remain in gratitude so that we bring joyful life to ourselves and to others. Thank you, universe, for giving us the intelligence to understand what really gratitude is so that we bring it inside us and we start breathing and make gratitude as our identity. Thank you, universe, for making me a channel of blessings so that I enlighten other people's life. Thank you, thank you, thank you. And open your eyes. Tell me, how was yesterday's day after writing the gratitude? Did you all feel nice? We started writing yesterday, right? Yes, ma'am. So basically, I am giving you all the practice so that you all start practicing on your own. That is why I'm making you all write. So today's chapter is about, see, yesterday we learned, I hope today you all have got a stone with you, magic rock. I had asked you all to get a stone yesterday. The magic rock. So can you see this rock placed on this picture here on the table? It is shining. No, there is nothing as such, but one minute, why I'm not able to see? When I share, I'm not able to see the screen. Let me see. You are able to see me? Yes, ma'am. Okay. I am not able to see you. What's gone wrong? 1 minute. Just give me 2 seconds. Yeah, no, it's okay. Because then I feel connectivity when I see in front of me the people. So today it is saying we are talking about magic rock. So reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, and not on your past misfortunes, of which all man have some. तो अगर हम देखें वो बोल रहे हैं कि आप विचार करो कि आपकी जो करंट प्रेजेंट ब्लेसिंग्स है वो ज्यादा है देन द मिसफॉर्च्यून्स व्हाट यू मेक इट वेरी बिग.
हमेशा जो चीजें हमारे पास नहीं रहती है हम उसके ऊपर फोकस कर करके हम ये बोलते हैं कि दीज थिंग्स आर नॉट देयर विथ अस. So, in the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. She herself is saying कि जब इसकी शुरुआत करते हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस में आने के लिए टाइम लगता है to make it as a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you to turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. यानी जो भी anything that reminds you to be grateful, जो भी मन में आपके ध्यान में आता है कि yes, I should be grateful for this, is helping you to turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. तो आप जिसके लिए भी थैंक यू बोलना शुरू करोगे, आप जिसके लिए भी प्रैक्टिसेस राइटिंग करना शुरू कर दोगे ग्रैटिट्यूड के लिए, let it be your parents, let it be your children, let it be what food, material things, whatever you have. The moment you will start becoming thankful, for your job, for your relationships, for the money which is coming into your house, you will see that it is growing more and more. So Lee Brow presented the gratitude rock practice in the Secret Film and book. Those who have not seen the Secret Film, please go and see it. And hi. So if you want, I will send the movie. I'll try to send the movie on the group. उसको एक बार जरूर देखना. Okay? Let your children also see that movie. The Secret Film and the book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. तो आपको उसके लिए मैंने बोला था कि ये जो रॉक है वो लेके आने के लिए, बिकॉज जो कोई भी एक स्टोन लेना है आपको, बेसिकली इट्स नॉट अ मैजिक रॉक. मैजिक रॉक हम उसको बनाते हैं. तो यहाँ पे वो बता रहे कि सीक्रेट मूवी में उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया था जहां पे एक फादर जो रहते हैं उनका बेटा बहुत ज्यादा बीमार होता है. ही इज ऑन द डाइंग कंडीशन. एंड उनके फ्रेंड जो होते हैं, जो फादर के फ्रेंड होते हैं, वो हमेशा कोई प्रैक्टिसेस करते रहते हैं स्टोन्स को लेके. तो जब भी ये फादर उनको पूछते हैं कि आप क्या करते हो इससे, तो वो बोलते हैं कि मैं मैजिक, ये मेरा मैजिक रॉक है, इससे मेरा हर चीज कंप्लीट हो जाती है. तो जब उनका बेटा बहुत ज्यादा बीमार होता है तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलते हैं कि तू जो मैजिक रॉक की बात करता है तो वो तू मेरे लिए भी भेज, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा. So that person sends him the magic rock, but basically it is a plain stone. It is nothing. It is just a stone. वो बंदे ने सिर्फ एक प्रैक्टिस उसके ऊपर कर करके उसको मैजिक वाला बनाया रहता है. तो ही सेज कि एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. स्टोन को हाथ में रख के the father starts saying thank you for that my son is healed and everything, and even the son starts practicing. And what happens is the जिसका यानी doctors had given up, doctor said that he will not remain alive, वो बच्चा बच जाता है. So from that time, that story is also added in the secret movie. If you go to see the secret movie, that is also mentioned in that कि जब से वो that rock became a something, what you can use. इट्स बेसिकली योर बिलीफ. आपका जो बिलीफ होता है ना कि यस ये चीज होके रहेगी, तो जब आप उस चीज को यानी मैजिक रॉक बिकेम जस्ट एज अ टूल, जस्ट एज अ टूल. तो आपको एक स्टोन लेना है और उसको हमेशा अपने पास रखना है. देन फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू से थैंक यू फॉर इट. Now, whenever you are saying, first, she's saying, find a rock or a stone, choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. See, आप जब ये practices ध्यान से करोगे ना, because the first one, yesterday what we did, and magic rock practice is very, very important and should be fitting into your daily routine. आपकी daily routine में ये आ जाना चाहिए. So she's saying, first find a rock or a stone, choose a small size that fits in the palm of your hand, and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it.
So you can find a magic rock from your garden, if you have one, or from a riverbed, creek, ocean or park. जब भी आप किधर जाते हो तो आप देखो, आपको ऐसा स्टोन मिलता है जिसके शार्प एजेस नहीं हो, तो वो आप आपके पास लाके रखो. एंड इफ यू डोंट हैव इजी एक्सेस टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, then ask your neighbors, family or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as a magic rock. So यहाँ पे basically she is talking about how to connect with the earth element. धरती जो होती है उससे हम कैसे कनेक्ट होके we can ask for our things. So when you found your magic rock, put it beside your bedside in a place where you will definitely see it when you go to the bed. Every day, because this practice जो है वो रात की practice है. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to the bed. And if you use an alarm clock, put it next to your alarm clock also. This practice you can make your children also do. Ask them to keep a magic rock near their bed. Okay, you can ask them to keep a magic rock near their bed, and every day ask them to say thank you to it for the days, whatever they have eaten, whatever they have done in the school or at home, what practice from morning, what did they have, what did they do. You can ask them to be thankful for that before sleeping. So here she's saying that you put it near the bed, and if you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. And tonight, just before you get into your bed to go to sleep, pick up the magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. And think back carefully through all the good things that has happened during the day, and find the best thing that happened that you are grateful for. So you have to scan your day. आज दिन भर में आपने क्या क्या खाया, क्या क्या अच्छी चीजें हुई. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम सोने को जाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑल नेगेटिव थिंग्स होती है. ये कैसे होगा, कल इसका क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, कल ये मीटिंग है, कल उसको ये करना है, राइट. बट अगर व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द गुड थिंग्स विच हैज हैपेंड इन योर डे एंड यू स्लीप विद दैट, आप उसके लिए थैंक यू बोलते हो कि आज अच्छा क्या हुआ, आपने अच्छा खाना खाया, आज आपकी मीटिंग अच्छी गई, आज आपके पास पैसे थे किसी को देने के लिए. तो जब आप उसको थैंक यू बोल के सोते हो, यू विल सी दैट यू आर गेटिंग अप फ्रेश with good positive vibes. And then say the magic words for the best thing that happened, and return the magic rock to its place and to your bed. And that's it. 1 minute. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. And before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. See, दिन में हमारे नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी चीजें होती है. इफ यू स्कैन थ्रू योर डे, कभी कभी हम अगर थ्रू आउट द डे में हमने कोई नेगेटिव थॉट में भी गए होते हैं और पॉजिटिव थॉट में भी. हो सकता है आज आपकी फ्रेंड ने कॉल किया हो, सो दैट वाज द बेस्ट टाइम यू हैड टुडे. या फिर आप फ्रेंड के साथ में डिनर पे चले गए हो या लंच पे चले गए हो, सो दैट वाज द बेस्ट टाइम. So some relatives came home, you enjoyed with them. So think about what good thing happened and just say thank you for that. And she's saying that is what today's practice is about. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice before you go to sleep. Think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding a magic rock in your hand, and be grateful as you can be for that thing and say thank you. आप आपके rock का नाम भी रख सकते हो. If you want, you can keep the name of your rock so that you feel connected. It is not just a practice. It is something where you are going to create connection with that. You are going to talk as if you have some friend to talk. So you are talking. So he's saying she's saying that you can keep your name also. जैसे मैंने रॉकी रखा है. So using a rock seems like such a simple thing to do. But through this practice,
1 minute. उसी में सेशन में છે બેટા मैं सेशन में છે हाँ सर हाँ बाय So using a rock seems such a simple thing to do, but through this practice you will see magical things begin to happen in your life. हमको ऐसा लगता है कि this is very easy practice, but the moment you will start keeping the rock beside your bedside, and every day you look at it, and before sleeping you are saying all the good things to that rock कि आज ये चीज हुई. So you will see how much difference it is making when you get up in the morning. So when you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things, because जब आप एक चीज ढूंढना चालू करोगे आपको ध्यान में आएगा, अरे ये भी आज अच्छा हुआ था, अरे ये भी आज अच्छा हुआ था, आज मीटिंग भी अच्छी हुई थी, अरे आज फोन कॉल भी अच्छा हुआ था, यस आज तो मैंने ये भी खरीदा था पैसे से. So you will search through many good things that happen, and in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. So this practice takes you to think about all the good things which has happened throughout the day. So you will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. तो जब आप ग्रैटिट्यूड करके सोओगे और ग्रैटिट्यूड करके उठोगे, it will make a difference, because morning you get up, you will start doing count your blessings. So she's saying the count your blessings and the magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. तो लाइफ भर अगर आप लाइफ भर बोलते हैं ना, इफ यू वांट समथिंग नाइस, यू वांट abundance in your life in all the areas, ये दो प्रैक्टिसेस कभी भूलना मत. Count your blessings and magic rock. This rock is always there near my bedside, and this I had picked up from where, when I had gone to travel somewhere, वहां पे they had taken us to some Buddha this thing. I had picked up from there. So आप देखो आपको कहाँ से गार्डन में पार्क में कोई ऐसा मिलता है तो आप उसको ले लो, और उसका आपको you have to start forming a connection with that magic rock. तो आपको जो भी चाहिए ना सुबह में भी, I should get up early and do my practices, और कल मेरा ये मीटिंग है, मेरा मीटिंग, you can speak to the rock and sleep, and you will see the difference. So the count your blessings and the magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. And in fact, they are so powerful that together they would change your life in few months. तो अगर आप ये दो चीज को रोज फॉलो करते हो, पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड लिखते हो, आप देखोगे कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices, because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. तो ग्रैटिट्यूड जब आप करना शुरू करते हो, वो आप एक मैग्नेट बन जाते हो, एंड लाइक अ मैग्नेट यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर गुड थिंग्स इन योर लाइफ. And she's saying the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. और आप देखोगे कि आप उसको increase कर रहे हो. So when you have a strong magnetic force of gratitude, like like magic, you automatically magnetize everything you want and need to. तो जो भी आपको चाहिए आप देखोगे, because you have started being in gratitude. और आपने जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया, आपने जैसे उसको फील करना शुरू किया. सी फर्स्ट इनिशियली आई माई सेल्फ आई एम टेलिंग यू, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फील. तो आपको 2-4 दिन फीलिंग नहीं आएगी, बट जब आप उसको अकेले बैठ के कंटिन्यूस भी लिखोगे ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि यू विल स्टार्ट हैविंग दैट फीलिंग, आपको फील करके आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो. So magic reminder, be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. Okay, so we will be reading कि कल के लिए हमको क्या चाहिए. So today's magic practice number 2, the magic rock. Repeat the steps 1 to 3. Magic practice number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings and write why you are grateful for.
reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that. तो जब भी आप ब्लेसिंग्स लिखते हो, आप हर एक ब्लेसिंग को पढ़ोगे और फिर उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से बोलोगे, फील करके. So that is why I say that keep your hand on your heart so that, थोड़ा connection होता है हमको. So find a magic rock and put it by your bedside. Before going to the sleep tonight, hold your magic rock. आपको ऐसे hold करना है आपके hand में before you sleep. And कितनी बार आपको ऐसा होगा कि आपने हाथ में पकड़े पकड़े आपको नींद लग गई. तो catch it in your hand and just say कि today this good thing happened, आज ये हुआ, आज क्या क्या अच्छा हुआ. सिर्फ अच्छी चीजों को याद करके रॉक को हैंड में रख के थैंक यू बोल के सोना है. सो दैट यू आर पुटिंग इन. से ये मैजिक प्रैक्टिस आपको बहुत इजी लगती होगी, बट दिस प्रैक्टिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस. बिकॉज जब आप सोते हो और मैजिक रॉक को आप ग्रैटिट्यूड बोलते हो कि चीजों के लिए, कि आज ये अच्छा हुआ, आज मेरी मीटिंग अच्छी हुई, आज मेरे रिलेटिव ने बात किया, या आज मेरे मैनेजर ने बात किया, मेरे बॉस ने बात किया, मेरे कलीग्स ने बात किया, या मेरे बच्चों ने आज मेरा बहुत अच्छे तरीके से बात किया, या माई हस्बैंड गिव मी अ गिफ्ट. वट एवर गुड थिंग हैपेंड, योर टुडे यू वेंट आउट एंड हैड लंच, जो भी आपने किया, यू हैड गुड डिनर विथ योर रिलेटिव्स आपके घर पे आए, एंड इफ व्हेन यू से कि आज ये बहुत अच्छी हुई, हमने बहुत एंजॉय किया यार, इतनी मजा आया, इतना मजा आया, मैं तुमको, आप इस तरीके से जैसे आप एक फ्रेंड को बात करते हो, आप रॉक को इस तरीके से नॉर्मल, नो नो फॉर्मेट, नथिंग, आप उससे बात करोगे और रॉक को थैंक यू बोलोगे. डू यू नो रॉकी, जैसे मैंने उसका नाम रॉकी रखा है, तो मैं बोलती हूँ डू यू नो रॉकी, आज है ना ये विक्की आया था घर में एंड वी एंजॉयड अ लॉट, एंड उसके बच्चों ने इतनी मस्ती की मेरे साथ में, ऐसा. सो व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू आर गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिसेस. तो जब ये आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाउ हाउ इम्पोर्टेंट these practices are and what difference it is making into your life. आपको बहुत इजी लगेगा ये प्रैक्टिस, बट दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, एंड दिस इज आपको लाइफ लॉन्ग करनी है. काउंट योर ब्लेसिंग्स and your magic rock practice. So say magic words, thank you for the best thing that happened today, and repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. आज हम 22nd डे पे है ना, तो 28 डेज का प्रैक्टिस है. सो रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस. तो कल की मैजिकल प्रैक्टिस ये बोलती है कि आपको कल के लिए, बिफोर आई एक्सप्लेन एंड वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू व्हाट यू नीड टू डू. You have to collect 3 photographs of the closest relationship, okay, and be ready with you for tomorrow. तो कल आपको बड़ा साइज हो, छोटा साइज हो, पासपोर्ट साइज हो, ओके, ऑल द रिलेशनशिप्स विच यू वांट, तो उसमें से आपको 3 चाहिए, ओके. 3 photographs should be there with you to do tomorrow's practice, because tomorrow's practice is going to be on relationships, okay. So what you need to do is, the photographs could be, 1 minute, I will just tell you. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, boyfriend, your business partner, your sister. You might choose your best friend, your grandmother, your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have photograph of each person, okay. The photograph can be just of the person or only both of you together. आया ध्यान में? तो कल के लिए आपको 3 फोटोग्राफ्स रेडी रखने हैं, जो भी रिलेशनशिप के ऊपर आपको यू वांट टू फील एंड हैव ग्रेट ग्रैटिट्यूड. इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, इट कुड बी योर हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, बिजनेस पार्टनर, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, ग्रैंड मदर, अंकल, कोई भी, बट उसके फोटोग्राफ होने बहुत जरूरी है आपके पास कल. It should not be a group photograph. It should be either the person's single photograph of passport size, or it should be a photograph where you are there along with that person only. Okay? तो कल के लिए आपको ये रेडी रखना है. आज के सेशन में से any questions coming to your mind? आज के सेशन में से Ma'am, I don't, as of now, I don't have the question, ma'am. Okay. Great. Hello? Yes.
Great. If you don't have any question, it's okay. I think you have, your voice is breaking. No, actually, I want to share one experience, ma'am. Great. We can, Let me join again, ma'am. yeah. So how is the, Manju ma'am, how is the feeling of writing Am I gratitude? audible, ma'am? Yes. Yes, Akshata ma'am. मैम आपका आवाज मेरा आवाज नहीं आ रहा है? फिर मेरे नेटवर्क कुछ आई इश्यू है? थिंक मैम मेरे एंड पे भी कुछ रेंज इशू है Because of the rains or something? I don't know. But Akshata ma'am, I can hear you now. Tell me. Unmute yourself. You are on mute. Huh? Ma'am, today's experience. Yeah. Okay, so today I wrote that gratitude, no, ma'am. After writing the gratitude, a whole day I was very happy and it was joyful. And after coming home also that freshness was there, and now also I'm feeling something happy. And today we had the meeting as well. In that also I'm enjoying somehow by making just jokes or talking something and making fun something. And I felt that after the meeting today my day was very nice. I've spent it lovely. What Very you good. said You like sent this, me in the this morning. thing, no, this, You had yeah, sent me in the morning how whether you have written correctly or not the yeah. gratitude. So That was after that, really nice because the more you will write in the morning also, I'm telling you, it takes hardly 10 minutes. Even if you just write 10, things for you're grateful for, you will see the moment you have started, na, there is that is what I said, na, the moment you will start doing this, you'll start feeling happy first. जब आप और फिर see how we attract things. अंडरस्टैंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट पहले तो देखो अगर आप हमेशा नेगेटिव रहोगे यार मेरा हो ही नहीं रहा है यही प्रॉब्लम्स है वो तो थिंग्स यू विल नॉट अट्रैक्ट थिंग्स बिकॉज यू आर वॉट एवर यू आर थिंकिंग वॉट एवर यू आर सेइंग you will see in your real life. But the moment you'll start becoming happy, see, happiness is the first basic thing I always say कि अगर आपका mindset change होके आपके mind में happiness आ गया है ना आपके मन में एक अलग तरीके का फीलिंग आ गया है माइंडसेट यू हैव बिकम फ्री यू आर नॉट वरीड अबाउट मनी यू आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन तो बिकॉज यू आर कंप्लीटली विथ यूनिवर्स नाउ बिकॉज yeah, that thing I observed, ma'am. After having the connection with you, that is from mirror work, that I felt. So before the mirror work, the same thing, the negative things was getting repeated in my mind, and that will be attracted me. So now I stopped that, and whatever I will think, that positive things are going to attract me. So that great. has experience, and Wow. even I told my sister as well. So I experienced, you Yeah, missed I it. can I see a told her smiling you missed today. it. No, really, actually, you can ask Manju ma'am also because she's been in a long time and we have like deeply practiced gratitude. हमको मम्मी पापा के लिए भी ऐसे लगता है कि बहुत कम है, but when you practice deeply, you'll understand there are so many things you have still to be thankful for your parents also. And the more you start practicing, gratitude for all the things that you have, पहले तो आप हैप्पीनेस में आ जाते हो और जैसे आप हैप्पीनेस फील करना शुरू करते हो दैट वी से इज द हाई वाइब्रेशन यू हैव टू कम इनटू द हाई वाइब्रेशन ऑफ गुड फीलिंग्स तो जब आप गुड फीलिंग में रहते हो तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे अगर आप बैड फीलिंग में रहोगे तो आप नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे बिकॉज देन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार मुझे ये चीज मिल सकती है आई एम नॉट गुड इनफ तो द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि हैप्पी फर्स्ट इनसाइड तो सबसे पहले आपको हैप्पीनेस चाहे जो भी हो जाए आई एम गोइंग टू रिमेन माई सेल्फ आई एम गोइंग टू कीप माई सेल्फ हैप्पी एंड गुड अक्षता मैम नाउ यू आर रियलाइजिंग कि देखो अभी भी कभी कभी होता है कि वी गो इन टू द नेगेटिव थॉट्स मेरे साथ भी होता है अभी भी होता है दो आई एम अ बिग प्रैक्टिशनर आई विल से बट आई स्टिल देयर आर टाइम्स कि मेरे मुंह से कभी ऐसा हो जाता है कि मैं किसी के बारे में से नेगेटिव बोलती हूँ बट आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे बच्चे हैं ना मेरे दोनों बच्चे they are literally they immediately make me realize mommy you are a gratitude practitioner you should not speak like that
No, actually, I only switch myself, ma'am. If that negative things comes, no, so immediately I will switch over and I will Very consider good. it in a positive way. Very So good. that is helping me. Very nice. That is only what we need to do. See, नेगेटिव में तो हम बहुत टाइम रह सकते हैं. कमिंग इन टू पॉजिटिव इज ओनली वेरी चैलेंजिंग, यू नो, एंड देन यू बिकम, you know, I always say, even when my son is nervous now, I just tell him only one thing: either you do Ho'oponopono or you just start saying thank you, thank you. Even if you don't want to say anything now, you just in your mind you just say thank you, thank you, thank you, and you will see, you know, कि आपने खुद ही आपके माइंडसेट को चेंज कर दिया है. And the moment you change your mindset, you will start seeing that things are working for you. Things are working for you. Because yeah, yesterday Priya ma'am was asking, that day before yesterday, I think she was asking me ki why we should ask, like, when God has, if maybe God wants to give us something more. But understand, the universe has its way of, you know, कि आपको जो चाहिए आप मांगो. Ask, you will be given. Seek, you will be given. Because seek, when you seek something, okay, that is also seeking you. When you knock at the door opens for you. But मैं बोलूं कि नहीं, मुझे भगवान को जो देना है, but there are some times, you know, when you're not happy, when you get that thing. But if you tell God कि this is what I'm looking for, and if he feels कि yes, it is right for her and I really need to give her, he will give. But there will be also time कि when जब हमारा मन नहीं है, you know, means he wants to give us some lesson through that, then he will do that also. But जब हम एक डायरेक्शन दे देते, see, both things are okay. If you feel कि I'm happy कि मैं नहीं आस्क करूँ गॉड को और यूनिवर्स को, मैं नहीं बोलूँ कि आई वांट दिस जॉब और आई वांट दिस रिलेशनशिप और आई वांट दिस प्रमोशन और वट एवर इट इज, एंड यू फील कि आई एम ओके विथ इट, कि मुझे जब भगवान देगा तब मैं एक्सेप्ट करूंगी, देन यू वेट. देन यू वेट. It depends upon you how you want. Because I always feel that when I ask, I get, I receive. But I bring myself to that vibration to ask God. And I always say, when I say that also, okay, it's okay, God, जो भी आपको देना, अब आपकी मर्जी से देना. But I want this. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कोई ऐसी चीज मांगती हूँ which is like I feel it is impossible, but then I'll say and how do I tell God, I know there are this thing for me it is impossible, but for you it is possible. And when I keep on asking continuously, like हम जब छोटा बच्चा कंटिन्यूस जिद करता है तो हम बाद में बोलते हैं यार ले जा लेके जा थोड़ी देर खेल ले मोबाइल से, right? If your child is asking you, give me mobile to play game, and I'm saying no, you have to study, no, you have to study, no, you have to study, and then फिर वो बहुत आके बोलेगा नहीं मम्मी you're very good, मम्मी you're really very good, मम्मी I love you ना, मम्मी I do ना, मस्का मारता है अपने को बच्चा. एंड दैट टाइम फिर हमारा दिल पिघल जाता है और हम क्या बोलते हैं, अच्छा चल ले ले थोड़ी देर खेल ले. Because the child admired you, the child appreciated you, the child felt very happy, you know, while saying that to you, and आपका मन बदल गया. तो उसी तरीके से यूनिवर्स का मन बदल जाता है भगवान का, जब आप जिद करके भी मांगते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, you know that I deserve it. I always say that to universe, that you are the only one who's going to give me. I am not going to go to anyone. And I have believed that आप मुझे दोगे ही दोगे, भले आज नहीं दोगे 2 महीने के बाद दोगे, but I know that you are the only one who's going to give me, because you are putting a complete trust on him. Complete trust. जिसको भी आप मानते हो, you just surrender and just say I have complete trust on you. बस वहीं पे बात खत्म हो जाती कि यूनिवर्स नोस. यूनिवर्स बोलेगा यार ये तो अंधाधुंध आंखें बंद करके मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही है, इसकी इच्छा मैं कैसे पूरी नहीं करूं. फिर वो करेगा ही करेगा ना. यूनिवर्स भी मजबूर हो जाता है यार, भगवान मजबूर हो जाता है फिर अपने को देने के लिए. खुदा भी बोलता है कि यस, ये तो यार पीछे ही पड़ गई है, मेरे को देना ही देना है अभी इसको, नहीं तो मैं खराब हो जाऊंगा उसकी नजरों में. तो ही विल गिव. He has to give, but you have to have that faith. Yes, I will get when I want it.
That is more important. One more thing, ma'am, I want to ask. That is a little personal. So the thing is, some dispute is going from our place from a longer time. That is 15 years. Some areas that in my parents' house. So I want that has to be settled down. How I can ask that to the universe? You ping me up on the personal this thing. I'll write and send it to you how to write that. See Okay. what you need to put, because when you want, something to be settled, so first you have to, you have to write it in the dream form and then write gratitude for it. Yeah. Whatever it is, whether it is land, whether dispute of court, whatever it is, first then you have to start writing gratitude for it. Okay. Yeah, finally we are trying. We have tried it for many years, and we have went the God. We have what did No, so much of see, struggle. one So thing is still, it there. is not going to be getting solved. It will So get solved, because you should not speak like that. It is, we are just not. waiting to get it solved. We are Yes. just waiting to get it solved. These should be your words to the Okay. universe, that we are just waiting to get it solved. Second thing is that there is right time, when God knows, okay, this is the right time to get it solved. So now that you have come into this journey, you will understand ki how to put it into writing, when you ask. I see, I don't know about you people. आई वॉज वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल. मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती थी जब तक मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता था, जब तक उसका रीजनिंग मुझे नहीं मिलता था, व्हाई आई शुड डू दिस, व्हाई. बट द मोमेंट आई रियलाइज कि आई स्टार्टेड राइटिंग, इट हैपेंस फॉर मी. तो मैं अगर ओरली बोलती हूँ तो नहीं होता है, बट जब मैं रिटन बोलती हूँ तो तब हो जाता है. तो देन आई गॉट अ बिलीव कि यस, जब मैं आई पुट इट डाउन ऑन द पेपर, इट हैपेंस ओनली फॉर मी. तो आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन पेपर. आप एक्सपेरिमेंट करो आपके साथ में. आपको क्या लगता है कि आपने ओरली बोला तो हो जाता है क्या? बिकॉज फॉर मी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज माई वेन आई राइट, माई होल माइंड, माई होल ऑन ईच लेटर वेन आई एम राइटिंग ना, मेरा ध्यान उसके ऊपर जाता है कि वट आई एम पुटिंग इन द वर्ड. एंड जब आई एम राइटिंग, मेरा माइंड अंदर से वो चीजों को विजुअलाइज भी करता है. सो यू लर्न हाउ टू विजुअलाइज ऑल्सो the things that as if it is already happened. Okay, so don't say कि कब होगा and it's not happening. You just say कि we are just waiting, we get the results out of it. So see, what is that? Words have power. Whatever you are saying, if you say I'm not good enough, I am not capable, I'm not this, you are going to see all that only in front of you. आप लोग भी वही अट्रैक्ट करोगे, आप सब चीजें आपके सामने भी वही आएगी. आप जितना बोलोगे आई एम गुड इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम केपेबल, आई एम लवेबल, आई लव माई सेल्फ, आप जितना अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे ना, यू विल सी द थिंग्स. दैट इज वाई से आई डोंट रन बिहाइंड मनी. आई डोंट से कि मुझे इतना ही पैसा दो भगवान, मुझे इतना ही ये करो, या अल्लाह मुझे इतना ही. नहीं, आई डोंट स्पीक एनीथिंग लाइक दैट. आई जस्ट से दैट कीप मी इन हैप्पीनेस एंड ब्लेस माई चिल्ड्रन. Keep me in happiness and bless my children. Keep me in happiness, because that is the first important thing. See, when you start remaining happy, you yourself, when you start loving yourself. ठीक है यार, मुझे गुस्सा आता है, इट्स ओके, इट्स ओके. मुझे रोना आता है, इट्स ओके. मैं कभी कभी आई लूज माई टेम्पर, इट्स ओके. बिकॉज अरे ह्यूमन बीइंग, तभी तो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना. यू कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर एवरीवन. यू कैन नॉट बी परफेक्ट. तो इवन इफ यू डू सम मिस्टेक, इट्स ओके. अपने आप को माफ करो, आगे बढ़ो. हम क्या करते हैं, उसका गिल्ट लेके बैठ जाते हैं, देन फिर वी आर अगेन स्टक इन द नेगेटिव दिस थिंग. एंड वी आर ह्यूमन बीइंग यार, हमने गलतियां करेंगे तो कौन करेगा? यस, लर्न फ्रॉम देन एंड मूव अहेड. हो गया आज. अपने आप को पूछो, आज इस गलती में से मुझे क्या सीखने को मिला. राइट इट डाउन, मूव अहेड कि यस, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल. Like if I've invested money somewhere, I became very particular after that when I lost money. Yes, now I've learned I should not invest to any other person because that person went absconding. Okay. So I learned a lesson from my mistake. But that doesn't mean कि फिर मैं अभी invest ही नहीं करूंगी.
right? Then I will never grow. If I stop trusting also people, then I will not have trust on anyone in life. So that also is very important for you. You need to trust other people. Shall we write gratitude for 10-15 minutes? Chalo, let's start. मंजू मैम मॉर्निंग में भी लिखते जाओ. You know now how to write gratitude. So morning में लिखते जाओ, even when we are not meeting. Because I said for 1 or 2%, I will not, because I started walking early in the morning now, because that I was missing my nature wala part. So I started going there. I see, the more you are near nature also, I'll really tell you, you will start feeling happy. जब आप tensed भी होते हो ना कोई चीज, when things are not working, चप्पल पहनो, नीचे उतर जाओ घर के बाहर, हस्बैंड को, वाइफ को, जो भी है घर में बच्चे, उनको बोलो मैं 10 मिनट में आती हूँ. बाहर निकल जाओ. गो आउट ऑल अलोन एंड जस्ट बी विद द नेचर. गो इन नियर बाय गार्डन, पार्क. आपके सोसाइटी में किधर छोटा सा भी गार्डन रहेगा ना, जस्ट गो. कुछ नहीं तो एक झाड़ के नीचे जाके बैठ जाओ. जस्ट सिट on your own for 10 minutes all alone. Breathe fresh air and come back, and you will see your mindset has changed. These are the techniques I have also used myself and I've seen the result. कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता था, जब मैं स्कूल में थी, मेरे ऑफिस में इश्यू हो गया, डायरेक्टर सेड समथिंग, I used to just come home, remove my sari, throw it, go down, change, and I used to just go down. I used to not have my cup of tea also. Because तभी दिमाग ऐसा ये रहता था ना, तो ऐसे लगता था कि हम किसी के ऊपर निकाल देंगे घर पे. So it's better, you go out for 10 minutes, explain it to your people कि I really need to be on my own for 10 minutes. Can I just be alone for 10 minutes? Speak, communicate. हमारा basic problem relationships में कहाँ आता है कि we don't communicate what our needs are. Like, see, my son was ringing just now. I immediately told him I'm in session. He understood. He said, sorry, I forgot. So, because see, I communicated to him, see, I'm in session. If I wanted, I would have, you all stop. I will first go to my son and I'll speak. No, because when you communicate to the front person, they understand, yes, you are busy with something or you want some time. तो आप अपने पर्सन को भी बोलना शुरू करो, अपने बच्चों को भी बोलना शुरू करो कि yes, I need to be alone for 10 minutes. Can I? और जब आपको गुस्सा भी आता रहता है ना, don't answer if your children ask you something that time also. Just tell them, it's okay, I will answer you after 10 minutes. Give me 10 minutes, I'll answer. And आप देखोगे कि वो 10 मिनट में आपको टाइम मिल गया कि मैं उसको क्या आंसर दूं. Sometimes children demand few things, na, like that ki, let me go for late night, let me do this, and your mind is not ready, and that time we are about to give back कि नहीं अभी तो मैं इसको बोल के फिर हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है. That time just stop yourself for 5 minutes, tell the child, okay, give me some time, I'll tell you. ऐसे करके 10 मिनट अपने आप को दो. थिंक व्हाट यू वांट टू स्पीक, वेदर यू वांट टू सेंड योर चाइल्ड और you don't want to send your child, or what you want to do, and finish it. So try this. Okay, so let's start writing gratitude for parents. मंजू मैम, आप आज बाहर हो क्या फिर से? हाँ मैम, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है. मैं बाहर ही आई हूँ, बट आई थॉट कि मैं अटेंड कर लूंगी, बट काफी डिस्टरबेंस है मैम. Okay, चलो, let's write gratitude for parents. First we'll write for mommy. Okay, I am truly grateful to my mummy because she made me wear warm clothes when I felt cold. आपको नहीं पता, जब आप छोटे थे तो आपको ठंडी लग रही थी, तो आपकी मम्मी ने आपको गर्म कपड़े पहनाए, so that you don't feel cold.
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल और थैंकफुल, जो भी आपको कनेक्ट होता है आप वो लिखो। टू माय, आप जो भी आप बोलते हो, आपकी मम्मी को अम्मी बोलते हो, अम्मा बोलते हो, आप वो लिखो क्योंकि उससे फिर फीलिंग आती है। ओके, आई यूज टू से मम्मी जी, तो आई राइट मम्मी जी। बिकॉज he gave me kada when I had cold. I am truly grateful. आपकी मम्मी ने आपको बचपन में काढ़ा पिलाया होगा when you were not well. क्योंकि पहले की मम्मी लोग वही करते थे, दवाइयाँ नहीं देते थे ना जल्दी। I'm truly grateful to my mommy because she took me to doctor for all my vaccinations. 1 साल तक हमको अलग अलग वैक्सीनेशंस दिए जाते थे, पोलियो, मीजल्स, एंड आवर पेरेंट्स रिलीजियसली ध्यान रख के कार्ड पे देख के हमको डॉक्टर के पास लेके जाते थे। सो वी हैव टू फील थैंकफुल फॉर दैट। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय मम्मी बिकॉज ही helped me pack my school bag when I started going to school. I am truly grateful to my mommy because she always taught me to tell the truth. चलो 5 लिख लिया हमने। Now we'll write for Papa. Basically, we write 10, but because of the time constraint, I make you all write 5. At least we start writing with 5. अब देखो इस चीज के लिए देर इज नो काउंट्स, ओके, बिकॉज देर इज सो मच ग्रेटिट्यूड टू पे फॉर योर पेरेंट्स की वी कैन नॉट से दैट आई एम गोइंग टू राइट ओनली 5। आपका दिल होता है आप ज्यादा लिखो, आपका जब भी मन करता है ना, वेन एवर सी इवन there are times, when I am very restless, I again sit, I take my book and I just start writing gratitude for my parents when I'm feeling very restless. So I am truly, because see, they are our source energy. And आप जितना उनके लिए शुक्र करोगे ना, it is less. Grateful to my daddy. आप क्या बोलते थे उनको? अब्बा, अब्बा, जो भी आप बोलते थे आप वो लिखोगे। I'm truly grateful to my daddy because he took me and mummy to doctor when
I was unwell. I am truly grateful to my daddy. इनिशियली लिखने को भी बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होता है, कंटाला आता है, but you'll see slowly you'll start getting feeling. Truly grateful to my daddy because आप आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. Truly grateful to my daddy because he spent money to buy bicycle for me when I started walking. I am truly. आप आपका भी लिख सकते हो खुद का, जो आपको आपके मम्मी पापा का पता है, जो आपके मम्मी पापा ने आपके लिए किया है. यू कैन राइट दैट ऑल्सो. आई एम ग्रेटफुल टू माई डैडी because he spent money to get fruits and Cerelac when doctors asked for my diet. I am truly grateful to my daddy because he bought the pills, that is medicine, when I was teething. जब आपके दांत निकल रहे थे, आपके मम्मी पापा को पूछना कभी भी, if your parents are alive, just ask them what medicine you all gave us when we were teething, when teeth was coming out. And be thankful for that. I'm truly grateful to my daddy because he spent money on my medicines and my nappies. आपको नैपी पहनाई गई होगी, आपके लिए दवाइयाँ लाई गई होगी, क्रोसिन का सिरप, तो वो पैसे डैडी ने दिए, राइट? तो हम उसके लिए थैंक यू लिखेंगे. ओके, चलो लेट्स राइट ब्लेसिंग्स नाउ फॉर. अभी आपके जहां पे आप बैठे हो, have a look at the room where you're sitting, whether it is hall, whether it is your bedroom. Okay, have a look at your room. बस पहले सिर्फ देखो कि आपके रूम में क्या क्या चीजें हैं. टेक 2 seconds. आपके रूम में फैन है, लाइट है, कर्टन्स है, the table is there, the chair you're sitting on, the phone you're having, the internet Wi-Fi you are having, right? The pen you're having to write. If you're sitting in your bedroom, then you have your bed, you have pillows, I have extension box, I have my dressing table here. तो आपको जो भी आपके नजदीक में जो भी चीजें दिख रही है ना, we are going to start writing thank you for that. So I am thankful to my
room because it gives me place to sit and take my session. You can write that it gives you place to sit and attend the session. I am thankful to the fan. आपको why लिखना है, okay? Because it gives me cool air and write my gratitude. What does the fan do for you in your room? और अगर AC है तो आप AC के लिए लिखो. I am thankful to the windows in my room because I get lovely view of the sky and feel the cool breeze. आपके रूम में आप देखो आपके रूम में क्या है and just feel and write the thank you. I am thankful to the chair I sit every day for taking my session and write gratitude. I am thankful to the table where I sit and take sessions and write my gratitude. So we feel that thankfulness to your table. इतनी help करता है वो आपको. Imagine करो some people don't have this also facilities. So जो भी आपकी लाइफ में currently है ना, आप किचन में जाते हो, आप किचन में फ्रिज देखते हो, फ्रिज you open the fridge, you are about to take milk, you're about to remove some food. Just say thank you to your fridge. The moment you on your gas, say thank you to your gas. Because of you, Agni hai, right? One of the fire element. So just say thank you to that, that because of you, I'm able to cook food. So I'm thankful to the laptop I have, which helps me take my sessions easily. Imagine अगर लैपटॉप नहीं होता तो how would you have worked? So I'm thankful to the Wi-Fi connection, which helps me connect with all people I am thankful to the bed because after 4 days work, I am able to relax and sleep
peacefully on it. Feel that gratitude कि यार आप इतना अच्छा बेड है आपके पास कि आप आराम से सो पाते हो. Some people have to sleep down. I am thankful to my dressing table and the long mirror, which shows me that I am very beautiful. बोलो अपने आप को beautiful. The other day, Priya ji was asking me, ki, how come my skin glows? I said, come into gratitude, you will understand. So I am thankful to the curtains in my room, which give me privacy when I want. I am thankful to the wardrobe in my room because it organizes my clothes so well. I am thankful to the extension box as it helps me to move and be flexible when I make my videos from different locations. आप देखो आपको क्या याद आ रहा है. ठीक है, you're done. We'll write this much. You can continue if you want, or you can do it in the morning. Just keep your hand on your heart. Feel your heart. And say thank you. Thank you for all these things in my room. Thank you for all the facilities I have. Wow, it's amazing. Thank you, universe. It's all because of you. कोई तो चीजें बिन मांगे और कोई मांगे मेरे पास आ गई है जो मुझे कंफर्ट दे रही है. Thank you for all this comfort which you have given me. I have geyser in my room. I have fan and AC in my room. I have bed to sleep. I have table to sit and do my work. I have dressing table to dress up myself very nicely. There are windows which bring in cool breeze, and I'm able to see good view outside of the sky. Thank you, universe. From my room, I'm able to connect with the nature, the trees I see outside, the people I see in other buildings. Thank you. Thank you, universe, for helping me in all these things and showering me with all the abundance. I was never felt that I have so many things to be grateful for. From the bottom of my heart, I thank you. Thank you for all these things जो मेरे पास abundance में है मेरे घर में. Thank you to the money
through which I got these things. And I'm that capable. My family is that capable. My husband is that capable. My children are that capable for providing me with all these comforts. Thank you, universe. Thank you. Thank you for all the comforts. Thank you. Thank you. Thank you. Feel that feeling. Feel that you are getting all these things. All these comforts are already there with you. And I'm focusing on the things which I don't have. So just feel that gratefulness and say thank you from the bottom of my heart. Thank you for my room. किसी के पास room भी नहीं है. Thank you for all the things that I have in abundance. Thank you for looking into all my comforts. I'm so blessed. I'm so grateful. Thank you, universe, from the bottom of my heart. Thank you. Thank you for providing me all these facilities. Thank you. Thank you. Will say thank you. Then open your eyes. Whenever you write, along with that, try to feel from your heart that you're really being thankful for it. Because when you think for your smallest thing, very smallest thing, कि मेरे पास आज ये पेन है लिखने के लिए, I have refills, I have book, and you will see the abundance flowing. Abundance flowing. Every time I write, thank you for my journals, thank you for my pen. 2 दिन के अंदर कोई ऐसा आ जाता है, कोई फ्रेंड्स आती है, कोई पार्टिसिपेंट, they present me with diaries. I have so many diaries, 6 to 7 diaries now collected, So in the whole year, I'm just getting diaries only. Because the more you become thankful for the smallest thing, smallness, even if you have a water bottle, stand. My son had bought the stand for me, when I started making videos, when I had my channel of tea and teacher for the teachers. And he had gifted me, when he started working, from his first salary. I didn't have that time the ring light and all, so I used to just put it on the like that on the phone. My behind I used to put one dabba and I used to keep. And my son bought this, so every time this is on my table. So whenever I look at it, I just say thank you for it. तो you see हमने छोटी छोटी चीजें आपको मिली होगी जिसका हमने थैंक यू किया ही नहीं है. रिकॉल कलीग्स ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया होगा, किसी ने आपको कुछ पेन दे दिया होगा, किसी ने आपको डायरी दे दी होगी, किसी ने आपको खाने की चीज दे दी होगी. तो देयर आर मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. Start feeling that thank you and just be thankful for that. So we wind up. So thank you all for joining. God bless you all. If any question on the personal listing, you can ask me. Okay. Any guidance required. So thank you all for joining. God bless you all. Have an amazing, blissful night. Relax. Take your magic rock in your hand. If you have not got the rock today, make it a point that you get it tomorrow. But today before sleeping, just feel your gratitude, for today, whatever the good thing that has happened, and just say thank you for it and then go to sleep. This way you are training your subconscious mind. So thank you all for joining. God bless you all. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.